I'm here today with two of our amazing students in Creator Accelerator who were able to scale their agency to amazing numbers. So why don't you guys introduce yourself and tell the people who you are? Yes, sir. My name is Omeed. I'm from Islamabad and I kind of handle the sales for our agency. And some of you guys inside CM might know me already because I am a part-time coach as well. But it's been an exciting journey. Umar flew us out all the way to Lahore for all of this crazy stuff. So I'm super excited and let's see what Zain thinks. Hey there, this is Zain from Islamabad. Islamabad ऐसी सिटी है जहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं मगर दो हसलर्स हैं जो सुबह 5 बजे उठ के काम करना स्टार्ट करते हैं और एजेंसी के अंदर मैं सारा बैक एंड जो है वो हैंडल करता हूँ. So why don't you guys tell me a little bit about where you guys were before you joined the program and where you guys currently are at right after joining Creator Accelerator? That's an excellent question, Omar. So before we joined CA, we were doing like $2.5K per month, and now we're actually doing crazy numbers just for like a couple of weeks inside the program. We're at 8.5K MRR per month, and that's super crazy. So you're saying you went from $2,800 to around $8,500 within 3 weeks of joining the program? Within 3 weeks of joining the program. That's how crazy it gets. That's awesome. So, what's been the biggest help of, after joining the program? What's been like that one key takeaway that's helped you scale, so fast and so rapidly? Honestly, I honestly believe in coaching a lot. The thing is, he's been through all of this, all stages of his career inside the agency. So for me, just having him as a resource that I can message at any time throughout the day, get help ASAP, deal with client situations and everything, just that has been a huge help in closing some of these clients. So I'm really grateful for that, and that awesome. has been the biggest game changer for us since we've started. So Omeed, right, I know you guys were able to scale so fast. I know you were stuck at like that 2K mark for quite a bit of time, but you were able to scale to $8,500 a month, right, super fast, and that must have been done through client acquisition. So what's been something that you've learned in Creator Accelerator that's helped you scale your client acquisition to where it is now? Honestly, one of the main things is being consistent. Like, we were inconsistent for a majority of the time that we were doing things on our own, right? Once we were connected with Umar, once we started working with you, the main thing that changed was we were sending unoptimized DMs. That was a huge bottleneck for us. So once we were in, I kind of had you run through my DM strategy, and we chose a unique revamp method, and it has produced a massive result. So that's been a huge change for us since we've started. Like, I've been getting so many responses, and I'm super grateful for that. But apart from that, like, even if you have the best message, if you're not sending it consistently every single day, like, it's not gonna work out. So you just have to be consistent, and you just have to send the right message. Awesome. That's awesome to hear. So besides client acquisition and everything, what's something else that you really enjoy about, Creator Accelerator? I think you guys already know the answer to it. It's what everybody says when they join Creator Accelerator. It's the community. We just held the mastermind event, and it was amazing. Dope. It was one of probably the best experiences that I've had holding an event. Me too. And I hope you guys have enjoyed, your stay as well, because you guys did win the October MRR challenge. Yes. So why don't you guys tell people about that experience, about winning the challenge, me bringing you out here to Lahore, you guys staying in the penthouse, enjoying your days here. So why don't you each tell your individual experience about how that has been, so maybe it might motivate somebody watching to take action and maybe win the next December MRR challenge that we're holding. Okay, so one of the main reasons, this is something I might not have said before, one of the reasons that I joined CA was because I saw the October MRR challenge on Omar's story. So I was like, yeah, I need to get in, because I was seeing the penthouse in all of these videos, and I was like, I need to see what all this hype is about, right? And so once we joined, we started, I actually ended up winning, which I was super stoked about. And then all of a sudden, like, one day, life goes from this to this. We're driven out in the most luxury car. We end up here at the penthouse. We're eating out every single day. We went on a massive shopping spree, and we've got so much work done. Like, it's been the best 3 days of my life. That's awesome. We've also been going in the pool quite a bit, even though it's very freezing, but it's been like a very memorable experience. What about you, Zain? क्या अभी तक अच्छा लगा? क्या scene? For me, the experience was really great. और मुझे जो है ना इससे बहुत ज़्यादा motivation मिली. The penthouse and driving in the Fortuner, going on a shopping spree. उसके बाद राया में supercars and going out on like luxury restaurants.
सुपर क्रेज़ी। और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना कम्युनिटी में नेटवर्किंग की काफ़ी ज़्यादा दोस्त बने, राफे, साइम एंड ऑल ऑफ दीज। और सब लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, अपलिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। That's awesome. Yeah, that's the environment we're trying to create at Creator Accelerator is like one where you can meet other like-minded people. Exactly. Yeah, something people struggle with a lot is like meeting like-minded people who share the same goals and same vision of them. So that's why we're creating a Creator Accelerator, and like we're even dialing it even more, especially with the new school and everything we're launching. But let's say someone's watching this video, right? They're on the edge of joining the program, but right, they just don't know if it's the right thing for them. Like, what would you say to them? I honestly have a really strong opinion on that. So for all of you guys watching at home, I knew coming into this that this was super high ticket, and we kind of weren't doing so well with the agency. As if Umar remembers on the calls, I was super transparent with it. Pretty nagging about the price. Yeah, I was. I was one of those clients. One of those, very hard to close. Yeah, exactly. But I knew the worth of the program, so I decided to burn the boats, hop in, and made my money back first month. So And for basically tripled it. tripled it, and with all of this stuff going on, like I don't see how this is not a no-brainer, because this is literally the best community in Southeast Asia or globally. Like I haven't been a part of any community globally, so Same. yeah, exactly. But I think it's one of the biggest in Asia so far, and that we're growing it, and we can't wait to. So boys, why don't we go outside and go enjoy the pool and continue the rest of the conversation there. Let's go. Even though it's freezing, I think you guys are gonna enjoy it. No, yeah, we're definitely gonna have fun. I have like this very interesting story, ठीक है? You won't believe me. He always has interesting stories. Oh, he's an interesting dude. मैं YouTube पे जो है ना स्क्रॉल डाउन कर रहा था, ठीक है? उसके बाद जो है ना आपकी प्रोफाइल मेरे सामने आई, ठीक है? काफ़ी पुरानी बात है, आप भी जो है ना अपने एजेंसी कह रहा हूँ, CA का कोर्स अभी स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है? मैंने देखा आपको, और उम्मीद की स्किल्स जो है ना कम्युनिकेशन की और DMs में क्लाइंट्स की भाई, हाँ, he knows how to slide in the DMs. Yeah. तो मैंने इसको वीडियो भेजी और बोला कि यार भाई इस बंदे के DMs में जाओ और इससे जो है ना नेटवर्किंग शुरू करो कि भाई किसी तरह जो है ना हम इस बंदे से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आप पहले से 50 से 100K के दरमियान में थे, तो और हम स्टक थे 2K से 4K में, और जल्द से जल्द जाना चाहते थे। तो हमने कहा भाई इस बंदे से कनेक्ट करना ज़रूरी है। उसी के 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, आपने जो है ना अपना CA का कोर्स लॉन्च किया, उम्मीद में, और उम्मीद की स्टोरीज़ पे आया, ठीक है। और अभी हमारा जो है ना कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा लो था, तो हम बहुत ज़्यादा स्पॉट में थे कि यार ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें। याद है। Yeah, we had a couple of calls. काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। उसके बाद फिर हमने कहा यार अगर 2 से 4K में जो भी बॉटलनेक्स आ रहे हैं इससे निकलना है, तो भाई ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और मैं तो अब तो इसको रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने सारे अपने पैसे जो है ना वापस बुला रहे इतना तो शॉपिंग हो गई आपकी। अब डबल ट्रिपल पैसे वापस आ गए। हमने जो है कोर्स वगैरह जो है बाय किया, उसके बाद आपने हमें गाइड किया, ठीक है, इसको सेल्स में, ठीक है। और मुझे भी याद है कि इसका एक क्लाइंट था शेरल, उसके अंदर ऑन द स्पॉट हमें एक इशू आया और इसने आपसे पूछा और उसी टाइम आपने हेल्प आउट किया, और नेक्स्ट डे जो है ना उसने तो अभी पैसे भी भेज दिए हमें, और क्लाइंट क्लोज, मनी इन द बैंक। तो और उसके बाद टीम बिल्डिंग और इन सारी चीज़ों में ज़िकी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। काफ़ी दफ़ा जो है ना एडिटर्स के साथ बात करते हुए ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे उनके सवाल आते थे जो मैं आंसर नहीं कर पाता था समटाइम्स, तो उसमें ज़िकी ने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया टू गिव देम अ पर्पस। उनके गोल्स के बारे में पूछो उनको, जो है ना आपने एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है, एक फैमिली इन्वायरमेंट, बट मेक श्योर टू कीप दैट बैरियर। अगर वो बैरियर से बाहर चलेंगे फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि अगर आपकी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी तभी आप जो है ना टॉप पे जा सकते हैं। So guys, how were your operations like before you guys joined Creator Accelerator? That's a really important question, और बहुत important part होता है operations आपकी एजेंसी के अंदर। हमारे operations में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे स्टार्टिंग में। ऑपरेशन जो है थोड़े थोड़े वक्त बाद ब्रेक होने लग जाता था, ठीक है, एडिटर्स उसको फॉलो नहीं करते थे, उसके बाद क्लाइंट्स भी उसको फॉलो नहीं करते थे, तो बहुत ज़्यादा मसले उसमें चल रहे थे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि क्या करना है, और उम्मीद फाइंड आउट योर कोर्स, और उसके बाद आई हैड अ मीटिंग विद ज़की, और उन्होंने मुझे इन ब्रीफ जाके जो है ना, इवन दो ही ऑल्सो हेल्प मी आउट,
विद क्लिकअप सेटअप और उसने वहाँ पे भी मुझे हेल्प आउट किया कि इस तरह करो। हमारे सिस्टम जो थे ना बहुत क्रिटिकल हो चुके थे, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ में ऑटोमेशन लगी हुई थी, हम उसको ना बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉम्प्लेक्स हाँ ओवर कॉम्प्लेक्स कर सुपर रहे थे। कॉम्प्लेक्स हाँ, लाइक मोस्ट पीपल तो उसकी वजह से वो अगर मैं किसी भी न्यू बंदे को सिस्टम पकड़ा दूँ ना 1 सेकंड के लिए तो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब हमें हेल्प आउट किया तो हमने उन सिस्टम्स को इतना सिंपल बना दिया कि अगर किसी बिल्कुल एजेंसी जो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट भी कर रहा है ना, उसको भी अगर वो सिस्टम दे दूँ ना तो वो भी इजीली उस पूरे सिस्टम को वो समझ जाएगा और विद इन अ सेकेंड उसको ना वो चलाना शुरू कर देगा और इम्प्लीमेंट कर देगा और वो इजीली आपको 0 to 5 के जो है ना वो सिस्टम आपको पहुंचा सकता है। Great answer. Like exactly, like people overcomplex their systems, especially when they're first starting out an agency. They have like Asana, this, that. But right, all you need is a couple of easy systems, simplify so that anybody who uses the system can actually use it. So I'm great to hear. So have your systems improved and your workflow, been better now? बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। पहले तो थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोस आ जाती थी तो पूरा सिस्टम चोक कर जाता था और डिलीवरी लेट, क्लाइंट एंग्री, सब कुछ जो है ना बस आउट ऑफ स्क्रिप्ट चला जाता था। Regarding team building, I know that's something you guys were struggling with before you joined the program. How has that improved, or like what's your plan with team building or overall? So honestly speaking, हमारी टीम जो है ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैश थी। ठीक है, समटाइम्स तो ऐसा होता था हम 2 लाख के एडिटर्स हायर कर लेते थे और उन्हें काम जो है कुछ भी नहीं आता होता था। ठीक है, और ऊपर से टीम के अंदर बहुत ज़्यादा एडिटर्स भी रख लिए थे हमने और वो काम कुछ भी नहीं करते थे। हमें मतलब कि ज़ीरो एक्सपीरियंस था और मनी जो है हमारा बर्न होता जा रहा था। ठीक है, और हम जो है लॉसेस में जाते जा रहे थे। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो है फिर हमने ज़िक्की ने जो है मुझे कोचिंग दी। उसने बताया कि आपने टीम के साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके साथ बात किस तरह करनी है, उनको आपने जो है बहुत ज़्यादा आपने उनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करनी है। एक जो है अपना keep a barrier basically. हाँ, एक बैरियर आपने जो है ना अपने और एडिटर और होल टीम के दरमियान में क्रिएट करना है। और एक और चीज़ है जो हम पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती थी, कोई भी किसी को नहीं जानता होता था, सब अलग अलग। हाँ, और उसके बाद हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया कि अब हर बंदा जो है वो आपस में कनेक्टेड है। पहले भी प्रॉब्लम आता था कि एडिटर हमसे पूछे होते थे कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, मगर अब हमने अपनी एजेंसी के अंदर ही एक एडिटर्स की ना कम्युनिटी बना दी है। ठीक है, और अब वो आपस में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और अब जो है ना वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गया, डिलीवरी भी इम्प्रूव हो गया और ओवरऑल ना एक एनवायरनमेंट हमारा इम्प्रूव हुआ है। That's awesome to hear. I'm happy that the agency is doing well. Yeah, much right? better. So getting away from the agency and everything, right? How has life overall improved ever since growing to 8.5K? That's a wonderfully timed question because we literally just moved out because I used to live in a crappy home, just being super transparent. So we had a crazy month. We did 8.5K. So I was like, yeah, I definitely can't keep the family in like the crappy house and everything. At the end of the day, you make money for your family, right? Exactly, you make money for your loved ones. So we moved to a much nicer place. You guys are going to see that in some of my upcoming videos. I have my own studio, my own setup. So now there's no disturbance, nothing, no noise. So we're going to see high quality videos and we're going to make a lot of good content over there. So it's been a drastic change in just this short span of time to where I'm super grateful. That's awesome. What about you, Zain? I know your sister recently got married, so has this all kind of helped you make sure that you could get that wedding done properly? Yep. So मैं अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊंगा। बताएं। My dad was like property tycoon back then. सो उम्मीद में से कभी कभार क्वेश्चन पूछता था कि आपने आगे लाइफ में क्या करना है। इसका भी घर पहले G11 में होता था, मेरे अब्बू का भी G11 में होता था। हम वहाँ से गुजर रहे होते थे तो ये मेरे से पूछता था, मैं कहता था कुछ भी नहीं यार, इधर ऑफिस में बैठ जाएंगे क्या ये वो। तो उसके बाद जो है ना कुछ स्टफ स्कैम वैम हुआ, काफ़ी डाउनफॉल आ गया, फिर हमने काम वगैरह शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल तक जो है ना हमने सोशल मीडिया एजेंसी को स्केल करने की कोशिश की, मगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्केल नहीं हो रही थी। हाँ, होल्ड बैक कर रही थी, बॉटल नेक्स आ रहे थे, चोक्स आ रहे थे। 2 साल तक हम 2K से 4K तक स्टक थे। ठीक है, उसके बाद विद इन 1 मंथ हमने जो है ना 8K हिट किया विद द कोर्स। ठीक है,
और बीच में ही मेरी जो सिस्टर है उसकी वेडिंग भी थी और हमारा जो मेहंदी का फंक्शन था वो मेहंदी का फंक्शन जो होता है वो बहुत फ़न होता है, ठीक Super है। crazy event, by the way. तो हम उसको जो है ना घर में प्लान करने का सोच रहे थे, अब ये उसी मंथ के अंदर सब कुछ है, ठीक है। और जैसे ही हमने 8 के हिट किया, मैंने कहा ये बोरिंग इवेंट घर में क्यों करना है। 8 के आ गया भाई के पास, लेट्स रेंट अ फार्म हाउस एंड सिक इवेंट जो है ना फिर हमने वहाँ पे किया और वहाँ पे कुछ वीडियोस भी लगाएंगे। हमने बहुत एंजॉय किया, डांस ये वो, और फार्म हाउस भी बहुत ज़्यादा सिक था। और वो उस महीने में जो 8 के ना उसने जो है मेरी तो भाई लाइफ सेव की और एक मेमोरी बनाई है। Not only for you but for your family as well, I would say. But yeah, man, I'm super happy that you guys are enjoying the program. I can't wait to help you guys scale to, you know, those multiple 5-figure months. 50K coming very soon. Yeah, I really do believe in the first 3 months of 2025, right, we'll be there. So any closing remarks you guys want to say about the program, you know, the course, or, you know, if anybody's watching this, you know, wants to join, right, what do you have to say to them to kind of close it off? And, you know, what's your overall experience been about, you know, coming to Lahore as well? You know, you can kind of delve into that as well. Coming to Lahore has been crazy. Like I used to watch these guys on Instagram and be like, okay, I'm gonna be like that someday. And then like I see these guys walking around me, like interacting with them, making content with them and everything. Like my life has changed so much within just a couple of weeks. And just apart from that, the one thing I was super hesitant about when I was actually joining CA was, you see, there's a lot of fake gurus and mentors out there, so everybody's just trying to sell you a course, right? So I was just scared I'd get burned, because we've been burned in the past as well, right? So I was super scared making the investment and everything. But the one thing that I truly appreciate about CA is, like, Umar really cares about your success and like goes out of his way to make sure that you succeed, right? You call him at odd hours, he picks up. You message him anytime, you ask him any stupid problem, he helps you out. So I'm super grateful for your help. It's been a key to making sure that we hit that 8.5K. So that's something that you don't see out there, right? People don't care. People make a course, you watch the videos and they're done with you, right? They don't want anything to do with you. You've already paid them, they've made their payday, they're gone on to the next person, right? Exactly. So that's not what you see with CA. So I'm super happy and can't wait to hit 50K and then 100K soon. Let's do it. Awesome. Thank you guys so much for, you know, coming to Lahore. Hope you guys had a great experience. Let's scale to the top now. Let's do it. Let's go.